Good morning, student. Now the next question number 12, because up to question number 11 we already taken in the previous video. Okay, so from question number 12 to 16 and is onward we will take in this video. AB, BC and AD, AB, BC and AD of a triangle ABC are respectively proportion to the PQ, QR and PM. Here AD and PM are the medians. AD and PM are the medians. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. दो triangle similar show करता है. सबसे पहले हम लेंगे जो information given दिया है उसके बारे में लेंगे हम लोग. What is the given information? AD and PM are median. Now if they are median, it means that BD is equals to DC and QR is equals to MR. Okay, and that is of equals to half of BC. Means BD is equals to DC is equals to half of BC. This is equation number 1. And the second is what we write here. QM is equals to MR is equals to half of QR. ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 2. Got it? इतना समझ में आ गया. अब जो इंफॉर्मेशन दिया है वो लेंगे AB, BC and AD are respectively proportion to QR, PQ, QR and PR. ले लिया हमने. Proportion है मींस रेशियो इक्वल है. Got it? It is the given information. Now here instead of BC can we put here twice of BD? क्योंकि BD is equals to half of BC है, तो BC is equals to twice of BD हो गया कि नहीं? तो यहां पे लिखता हूं मैं AB upon PQ is equals to BC की जगह क्या डाल रहा हूं मैं? Twice of BD. Twice of BD. समझ में आया कैसे डाला? ध्यान में आ गया? BD is equals to half of BC है, तो BC is equals to twice of BD upon QR. QR means twice of QM, so twice of QM that is of equals to AD upon PR. PR नहीं क्या है? PM है. Sorry, PM. PQ, QR and PM. PM. Here PM. Got it? So this 2 and 2 get cancelled. What we will get? AD upon PQ is equals to BD upon QM is equals to AD upon PM. This is of equation number 3. Got it? Now here AD upon PQ, AB upon PQ. Got it? BD upon QM, AD upon PM. These all the three sides of this triangle are similar to are proportion to the sides of the another triangle. So we will consider the triangle. In triangle, कौन सा triangle लेंगे? ABD and second triangle PQM. In both the triangle, AB upon PQ is equals to BD upon QM is equals to AD upon PM. ये लिखा मैंने from 3. And if all the three sides of one triangle are proportion to the three sides of the another triangle, therefore triangle ABD is similar to triangle PQM. This is of equation number बोलो या फिर by A sorry कौन सा टेस्ट हो गया यहाँ पे? साइड टेस्ट. अब दोनों ट्राइंगल तो हो गए सिमिलर. ओके, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो corresponding angles and corresponding sides are also corresponding sides are in proportion and corresponding angles are congruent. So corresponding angle में मैं ले सकता हूँ angle ABD is congruent to angle PQM. This is CPST. Corresponding parts of similar triangle. Now this ABD can be written as ABC. ले सकता हूँ क्या? ABD means B और ABC means B is equals to angle PQR. इक्वेशन नंबर दिया हमने 4. इतना समझ में आ गया?
Now we consider the triangle ABC and triangle PQR. ले सकता हूं मैं ये दोनों ट्राइंगल में AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR. कहां से लिखा? दिख रहा है आपको? कहां पे दिख रहा है? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR. ये दिया ही है ऑलरेडी, गिवन में लिख देता हूं यहां पे गिवन, क्योंकि दिया हुआ था. ओके, अब ये AB एंड BC ने बनाया हुआ एंगल B दिख रहा है. सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, और ये लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 4. देयरफॉर कौन सा रेस्ट हो गया? दो साइड और इंक्लूडेड एंगल. देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड टेस्ट. बाय साइड एंगल साइड टेस्ट. Now the next question 13. D is the point on side BC of triangle ABC. So for solution, so here the diagram is not given. You have to draw the diagram. So first we draw the triangle ABC. एक ABC triangle draw कर लेंगे हम लोग. This is of your ABC. Got it? Such that angle ADC, D is the point on BC. BC भी C है. यहाँ पे कहीं तो भी आपका कौन सा पॉइंट है? D. Such that ADC is equals to BAC, means here the point D we consider. Okay, so which angle? ADC is equals to angle BAC, means ये वाला एंगल है, ये बड़ा एंगल. Show that AC square means AC square is equals to BC. BC means ये साइड लेना है और CD means ये साइड लेना है. अब ये जो साइड्स दिख रहे हैं आपको AC, BC and DC, these are the sides of triangle BAC and triangle ADC. दिखाई दे रहा? कौन सा ट्राइंगल में? ट्राइंगल BAC और ट्राइंगल ADC, ये दोनों ट्राइंगल में ये साइड्स दिख रहे हैं. तो वी विल कंसीडर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? BAC लिया. ओके, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ADC. चेक करो, BAC का A और ADC का D दोनों इक्वल दिया है. एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC. It is given information. Got it? Now in both the triangle, this angle is common angle. दोनों ट्राइंगल में एंगल आ रहा है वो. BAC में C आ रहा है, ADC उसमें भी C आ रहा है, यानी दोनों एंगल में एक ही एंगल दिख रहा है दोनों ट्राइंगल में. सो एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल ACD. ये है आपका कॉमन एंगल. देयरफोर हमको लेना है यहां पे ट्राइंगल BAC is similar to triangle ADC by AA test. अब AA test से हमने सिमिलर क्यों दिखाया? सिमिलर दिखाने का कारण ये है क्योंकि हमको प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD. CA स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? CA इंटू CA इज इक्वल्स टू CB इंटू CD. अब मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, किसी न किसी को तो ट्रांसफर कर सकता हूं. CA अपॉन BC कर लेंगे. CA अपॉन BC इज इक्वल्स टू CD अपॉन CA. चेक करो, ये दिख रहा है? टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. अब टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन कब रहेंगे? जब ट्राइंगल कैसे रहेंगे? सिमिलर. सो इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. सो हियर वी शो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, therefore the sides are in proportion. Sides are in proportion means BA upon AD is equals to AC upon DC is equals to BC upon AC. Okay, this is corresponding parts of similar triangle. Now here we consider the two ratio in which AC is present. So these two ratios we consider. AC upon DC is equals to BC upon AC. Okay, now by taking cross multiplication AC into AC, that is AC square is equals to
BC into DC, and this complete the proof of the question. Now the next question, question number 15. We are not taking the question number 14. It is so lengthy, and this is not sufficient, so that you have to solve that question 14. Median वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, by using the same time you can solve that question, or you can ask me personally. So here the vertical pole of length 6 meter, एक vertical pole है, ये हो गया vertical pole 6 meter वाला, and cast the shadow of length 4 meter, 4 meter का उसका shadow आ रहा है, ये आ गया 4 meter shadow, नाम दिया मैंने ABC. Pole is always perpendicular to the base. At the same time, the tower cast a shadow of 20 meter long, 28 meter long. Long means क्या हो गया उसका? उसका हो गया length of the shadow. उसका हो गया length of the shadow. That is 28 meter long. Okay. So here we give the name, that is a PQR. This PQ is the height of the tower. This is the height of the tower. So this PQ is the height of the tower. Now, here what we find here? Here we want to find the height of the tower. So this is the height of the pole. This is the height of the tower. This is the length of the shadow, and this is the length of the tower. Okay. Now here for the solution, here we want to show these two triangles are similar first. सबसे पहले हमको ये शो करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर. ओके. एट द सेम टाइम बोला है, सेम टाइम चेक करो, वहां पे लिखा है ये सेम टाइम. सेम टाइम का मतलब क्या हो गया? मींस इफ द पोल्स आर लाइक दिस, दीज आर द पोल्स, एंड इफ वी कंसीडर द सन इज हियर, सो नेचुरली द रेज ऑफ द सन आर लाइक दिस. ये इस तरह से आएंगे रेज ऑफ द सन, तो इस तरह से उसका शैडो आएगा. मींस दिस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल wherever we consider at the same time. Now if the sun is here, then the shadows means like this. These are the shadows. Means length कैसा होगा? बढ़ेगा. Got it? You can identify by using the practical examples. Okay. Now here, first of all, we consider the triangle. In triangle ABC, and second triangle we consider PQR. In both the triangle, angle ABC is congruous to angle PQR because each of 90 degree दिया है अपने पास में. उसके बाद में एंगल एट द सेम टाइम में हम लोग ये वाला एंगल दोनों इक्वल बोल सकते हैं क्योंकि एक ही समय में लिया हुआ एंगल है ये. सो एंगल A is equals to angle P, एंगल एट सेम टाइम. बराबर. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by AA test. Now, by using AA test, these two triangles are similar, and as these two triangles are similar to each other, then the corresponding sides are proportion. Corresponding sides में हम ले सकते हैं AB upon PQ is equals to BC upon QR. This is corresponding parts of similar triangle. AC upon PR भी ले सकते हैं मगर इसकी जरूरत नहीं, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया. Okay. Now AB, the value of AB is 6 upon PQ is nothing but we don't know the value of PQ is equals to BC means 4 upon 28. So by using cross multiplication, what we will get here? PQ is equals to 6 into 28 divided by 4 and 4 into 7, that is 28. 4 sevens are 28. So PQ is equals to 6 sevens are. So 42 आएगा यहाँ पे. 6 sevens are 42. So PQ is equals to what we will get? 42. Therefore, we can write as a height of tower is 42 meter. Height of the tower is 42 meter. Next question, question number 16, and the last question is
here AD and PM means this is of your AD and this is PM are the medians. Median and इसका मतलब क्या हो गया? BD is equals to DC and QM is equals to MR. So here AD and PM are medians. Therefore BD is equals to half of BC. ये डाल सकते हैं हम लोग. ओके, साथ में ये भी लिख सकते हैं QM is equals to half of QR. This is of equation number 1. Got it? BD is equals to half of BC means BC is equals to twice of BD भी बोल सकते हो. QR is equals to twice of QM. BC is equals to twice of BD. QR is equals to twice of QM. Now here, what is given information? Triangle ABC is similar to triangle PQR. This is of your given. Now, if the triangles are similar, then sides are in proportion and angles are congruent. Angles are congruent means ABC is congruent to PQR. Equation number 2, CPST. Corresponding parts of similar triangle. इतना समझ गए? Angle B is congruent to angle क्या हो गया? Q हो गया. ये आ गया आपके पास. And AB upon PQ is equals to BC upon QR. Is equals to भी लिख सकता हूं मैं AC upon PR. This is corresponding parts of similar triangle. Now here BC, instead of BC can we put here twice of BD, and instead of QR what we will put here twice of QM. So from equation 1 AB upon PQ is equals to twice of BD upon twice of QM. ये लिखा मैंने from equation 1. So a 2 to get cancel, what we will get? AB upon PQ is equals to BD upon QM. आ गया, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3. इतना समझ में आ गया है? अब हम क्या करेंगे इसको? We will apply the triangle. Two triangles we can apply here. So in which triangle we will consider? We want here AB PQ AD PM. AB PQ AD PM. So naturally these two triangles we want to consider. So by using these two triangles, so in triangle which one? ABD and triangle PQM. In both the triangle AB upon PQ is equals to BD upon QM. ये लिखा हमने from equation 3. Got it? अब ये दो साइड्स तो प्रोपोर्शन आ गए. अब ये दो साइड ने बनाया हुआ AB और BD ने बनाया हुआ एंगल कौन सा है? B. So angle ABD is congruent to angle PQM. ये कहां से लिखा हमने? From equation 2. क्योंकि 2 में लिखा है ABC is congruent to PQR, तो ABC को जगह मैंने क्या लिख दिया? ABD सेम एंगल, D की जगह C की जगह D लिख सकते हैं क्योंकि एंगल तो सेम ही है. Therefore triangle ABD is similar to triangle PQM by side angle side SAS test. अब SAS test से दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए. And when the two triangles are similar to each other, then the sides are in proportion. Therefore, AB upon PQ is equals to BD upon क्या बोलेंगे? QM is equals to AD upon PM. ले सकते हैं हम लोग corresponding parts of similar triangle. Now here we want here AD upon PQ and AD upon PM. These two ratios we want here. Therefore, that is of equals to what we write here? AB upon PQ is equals to AD upon PM. So this complete the proof, and here we conclude the exercise 6.3. So 6.1, 2 and 3 we completed.